Zonal religious meets, popularly known as Ijtima of the faithful Muslims, ends at Hoskote this evening. What was witnessed as single largest gathering of believers who had assembled for divine mercy through supplications in congregation. It may be recalled that there were similar type of congregations at various places that were organized zonal wise. Today's congregation was part of the similar gathering that was planned by the people of Islamic faith. It may be recalled that it was held first at Attibele in Bangalore South, then followed by Razaq Saheb Palya in Bangalore North, at Kengeri in Bangalore West, and in Bangalore East in Hoskote as last leg of the congregations. It may be recalled that these congregations are taking place after a period of lull due to COVID pandemic period. It is believed that all the congregations in all four zones added value to the participants who had waited to witness such events to purify their belief in Almighty. The final moments were full of satisfaction, where they sought blessings of Almighty for peace across the world and within the country. Supplications sought divine mercy to the believers and well-being of a peaceful world full of happiness and tranquility. के मज़ाफ़ात में चारों जगह पर इज्तिमा हुए हैं, इस इज्तिमा को लेकर के क्या कहना है आपको? माशाल्लाह तीनों इज्तिमा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा, वहाँ पर मजमा भी आना हुआ था और उसके अंदर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी हुआ और उसके साथ साथ जो है लोग बड़ी तादाद में पहुँचे और तीनों इज्तिमात कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से ये भी इज्तिमा शुरू हुआ है, चौथा इज्तिमा हमारा आखिरी इज्तिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको भी कामयाब फरमाए और यहाँ से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को हिदायत का ज़रिया बनाए और सारे आलम के लिए हिदायत का अल्लाह ज़रिया बनाए। आप समझते हैं कि इस तरह के इज्तिमात होना चाहिए? जी, इस तरह के इज्तिमात होने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोरोना के बाद जो है तकरीबन 4 साल के बाद ये हमारा इज्तिमा हुआ है, माशाल्लाह बड़े कामयाब रहे और इस तरह के इज्तिमात अगर होंगे और लोगों को जोड़ना, उनको तरगीब देना, उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब देना, अल्लाह रसूल की उन्हें बातें सुनाना, तो लोगों के अंदर एक दीन का जज्बा पैदा होता है इसके ज़रिए से। और जब लोगों की ज़िंदगी में दीन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर की ज़िंदगी चलती है, फसादात कम होते हैं, लोगों के अंदर की जो अनानियत है वो ख़त्म होती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसके ज़रिए से उम्मत का भी बड़ा फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह।